Yes, hello students. Good afternoon. I welcome you all on the platform of Global Online. Is this screen visible and am I audible? Please mention in the comment section. Yes. Today's lecture. Hello everyone. I welcome you all on the platform of Global Online. So as we know, Global Online platform has launched a complete course for upcoming Maharashtra Law CET examination 2023, and in this particular course we are dealing with the English section. Okay, we'll be discussing all the syllabus from the Maharashtra Law CET examination, and in today's lecture we'll be discussing about the English section, and today's English section will be discussing the important topic which is a figure of speech. Okay, so figure of speech is a topic जो काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ओके, दिस टॉपिक. सो before moving into the video, friends, before discussing the figure of speeches, let us discuss what are the complete course of features of Maharashtra Law CET examination launched by Global Online platform. Here you will be provided with the full syllabus, live video lectures. Okay, at the same time you will be provided with the full syllabus test series, 2000 plus MCQ question bank, full syllabus notes, and the course fees for all above feature is rupees 2000. Okay, if you have to get enrolled to this particular course, you can contact us on the given WhatsApp number, which is 8179138413. else you can download the Global Online application and follow the 3 steps that I will mention you in the upcoming slide and get enrolled to the course. Okay, so the most important and highlighting feature of this complete course is that it will boost your preparation by boosting your confidence as well as by scoring maximum marks. Okay, so एक बारी आप जो है 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करेंगे, फुल सिलेबस नोट्स को एक बार रेफर करेंगे, लाइव वीडियो लेक्चर्स अपडेटेड देखते जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो सॉल्व करते जाएंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा and will make sure that you will score maximum marks and have guaranteed selection in this upcoming law entrance examination. Okay, so for getting enrolled through the application, once you have to go through the Play Store, from where you have to search the Global Online application, install it. Once you will install it, open the application, you will find such UI. Okay, in this particular interface there is an icon downwards named as store. Click on store icon, you will move to the page called as my courses, and in this particular page of my courses there is a search tab. Okay, in this search tab you have to type CET. Once you type CET, course along with the fees will be displayed, and hence you can get enrolled to the course whichever you want to. अभी महाराष्ट्र सेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेस है. सिमिलरली फॉर CSIR नेट पेपर 1 पेपर 2, UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है. सो यू कैन गेट एनरोल्ड टू द कोर्स whichever you want to. So in today's lecture we'll be discussing about the topic simile. ओके, फिगर ऑफ स्पीच जो है स्टार्टिंग में सिमिली पढ़ेंगे, फिर मेटाफर पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, students are often confused actually between the two figure of speeches. One is simile and the another one is the metaphor. तो वो confusion भी दूर करेंगे. तो पहले तो शुरुआत से importance of simile पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं simile से. So simile is a figure of speech that compares between the two different things that have similar properties or characteristics. So दो different things के अंदर अगर comparison दिख रहा है हमें, comparison between the two different things which are having same properties, similar properties or characteristics. दो चीज़ों के अंदर similar properties, characteristics दिख रहे हैं और उन दोनों चीज के अंदर अगर कंपैरिजन है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज सिमिली.
Okay, and simile is often confused with metaphors, as I told you, which is a different figure of speech used for the comparison again. Metaphor भी comparison के लिए और simile भी comparison के लिए. Then how to differentiate between the simile and the metaphor may be your question. So the easiest way to identify a simile is opposed to a metaphor is to look for the words like or as. सिमिली के अंदर से दो वर्ड्स आपको दिखेंगे, वन इज लाइक एंड दी अनदर वन इज एज. ओके, अगर ये दो वर्ड्स दिख रहे इट मीन्स इट इज सिमिली. पहली बात सिमिली के अंदर हमने जो पढ़ी है दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स के अंदर कंपैरिजन है. देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरी चीज वॉज सिमिली एंड मेटाफोर आर ऑफन कंफ्यूज्ड, बट द मेन थिंग in the simile is the words like and as are used. words जैसे कि like और as simile के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. this is the second thing. okay, for example, as proud as peacock, as proud as peacock. now in this simile you can find the words like as. okay, simile के अंदर like और as यूज किए जाते हैं. metaphor हम आगे देखेंगे. some of the examples of simile I have mentioned here. the very first one is as black as coal. the second one is as blind as a bat. third, as cool as cucumber. as brave as a lion. cunning like a fox, as cold as ice, as busy as a bee. okay, I'll share the PDF you mentioned in the WhatsApp group. एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी मैं जो है I'll share you the PDF. okay, so here first example is like as black as a coal. पहले एग्जाम्पल देखेंगे. now I have told you सिमिली के अंदर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है. नाउ हियर द ब्लैकनेस of the coal has been compared with some other thing. Let us see the example. His face became as black as coal after being criticized. Okay, so the blackness of the coal, the characteristics of the coal, the color of the coal which is black has been compared with the face color of that person. So two different things have been compared together. The blackness of the coal has been compared with his face. okay, so as black as coal. and the second thing that I have mentioned you was simile के अंदर as और like words आते हैं, तो यहाँ पे as आ रहा है, it means it is simile. second example is as blind as a bat. my uncle is as blind as a bat without his spectacles. तो यहाँ पे as blind as again as इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, blindness of a bat. ठीक है, blindness of a bat has been compared with the blindness of the uncle. okay, comparison between man and that bat has been carried out. third example is as cool as the cucumber. okay, example देखेंगे. while all of us were panicking just before the declaration of the result, Nana was as cool as cucumber. नैना ने टेंशन ही नहीं लिया. नैना was chill. so Nana was chill can be mentioned as Nana was as cool as cucumber. coolness of the Nana or the calmness of the Nana has been compared with the coolness of the cucumber over here. again as has been used. as again a simile. as brave as again as brave as lion. while fighting the war, the soldier was as brave as the lion. the braveness of the lion has been compared with the braveness of the soldier. two different things, lion and the soldier, have been compared, and the characteristics of the comparison is the braveness, right? so cunning like a fox. next is cunning like a fox. अभी तक हमने examples as के देखे थे. as अभी देख रहे like. अभी क्या देख रहे like. cunning like a fox. don't trust his words. he is cunning like a fox. यहाँ पे like a fox दिया है. like a fox दिया है. okay, so here it is again a
Similarly, the cunningness of the person has been compared with the cunningness of the fox. As cold as ice, the expression on her face were as cold as ice. The girl is compared with the coldness. Her coldness is compared with the coldness of the ice. Okay. Next is as busy as a bee. The busyness of his wife has been compared with the busy of the bee, as busy as the bee. Okay. Look here now. My wife is as busy as the bee. Busy, bee. Okay, wife and bee has been compared here. Next figure of speech is metaphor. Now exactly metaphor क्या है? It is again a figure of speech जहाँ पे हम comparison कर रहे हैं, but the comparison is between two unlike thing. दो चीजें जो सिमिलर नहीं है, जो काफी डिफरेंट है, उनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं. देखना आप, these are two unlike things. इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. बट जो कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज अमॉन्ग द शेयर्ड ट्रेड्स. शेयर्ड ट्रेड्स इट मीन्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स. ट्रेड्स का मीनिंग क्या है, फीचर्स. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों अनलाइक चीज़ों के अंदर कॉमन है. एंड दैट कंपैरिजन इज नथिंग बट अ मेटाफर. A metaphor is a figure of speech that compares shared traits or the common features between the two unlike things. अभी यहाँ पे example देखना. My heart is bottomless ocean of love. Okay, a minute please. Yes, my heart is a bottomless ocean of love. तो यहाँ पे देखना, hurt की depthness. The depthness of the hurt has been compared with the depthness of the ocean. The depthness of the hurt has been compared with the depthness of the ocean. Ocean का depth हम count कर सकते हैं? No. No. Similarly, the love for her, for the person, is again compared with the depthness of the ocean. मतलब काफ़ी ज़्यादा affection है for that particular girl. Okay, so this has been compared with the depthness of the ocean. तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है. The comparison, you are comparing the deepness of the love to the deepness of an ocean. कितना ज़्यादा डेप्थ है ओशन का, उसका हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, डीपनेस ऑफ द लव फॉर द गर्ल. Not only does it shows the reader that your love is a very deep indeed, but it also creates a mental picture of the deep ocean. काफ़ी ज़्यादा deep है, love is काफ़ी ज़्यादा deep, it is काफ़ी ज़्यादा, the affection is काफ़ी ज़्यादा deep, but it also at the same time it is creating a picture of the depth of the ocean in your mind. Okay, so this is nothing but this is the metaphor. Examples of metaphor, let us see what are the examples of the metaphor. The first example is heart of a stone. Heart of a stone, cruel or stern nature. किसी का अगर वो काफ़ी ज़्यादा cruel nature है, तो we'll use a metaphor heart of stone. So my teacher has a heart of stone. It means her nature is stern or she is cruel in nature. Next example is the zoo metaphor. The zoo is the next metaphor. Its example is, meaning is crowded and noisy. Example दिया है, the classroom turns into a zoo during recess, during the intervals, during the lunch recess, or we can say during the lunch intervals. जो classroom है, it turns into the zoo. Zoo के अंदर turn हो रहा है, it means काफ़ी ज़्यादा noisy और crowded हो रहा है. Next example of the metaphor is time is money. The value of the time is as important as money itself. Time is money, my friend, is the example here. So यहाँ पे देखना, the value of time is compared with the value of money. दो डिफरेंट थिंग है, टाइम और मनी दो डिफरेंट थिंग है, उनके अंदर कंपैरिजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू. नेक्स्ट इज टॉल ट्री. टॉल ट्री इज द metaphor. Taller in height like a giant is its meaning. Okay, example is he is a tall tree. He is tall tree, it means उसकी height काफ़ी ज़्यादा है. His height is like a giant. Okay, next examples are the wind screamed in his face while he was riding the bike. The wind screamed in his face, it means सच्ची में क्या wind आके चिल्ला रही है? No.
उसका एक्चुअली कंपैरिजन हुआ है किस चीज़ के साथ. द राइडिंग ऑफ द बाइक हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द विंड स्क्रीमिंग. विंड स्क्रीमिंग मीन मतलब हाउ फ्यूरियसली इट ब्लू. द विंड कितने ज़्यादा फ्यूरियसली या फिर कितने इंटेंसिटी से वो ब्लो कर रहा है, उसके साथ कंपैरिजन किया गया है राइडिंग ऑफ द बाइक का. सो द मीनिंग, द विंड इज कंपेयर्ड विद अ स्क्रीम टू एम्फसाइज ऑन हाउ फ्यूरियसली इट ब्लू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गो फॉर अ वॉक और यू विल बिकम अ काउच पोटैटो. यहाँ पे एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे देन यू विल टर्न फैट और यू विल बिकम बल्जी. इसका कंपैरिजन पोटैटो के साथ किया गया. पोटैटो इज अ फैट एंड बल्जी एज वी नो. ओके, सो हियर द पर्सन इज टोल्ड दैट ही और शी विल टर्न फैट और बल्जी like a potato if he or she is avoiding the exercise. Okay, next example is her heart of stone was the result of the previous unfortunate events in her life. तो इस particular example का देखना कि her heart of the stone was a result of the previous unfortunate events. उसके life में उस मतलब कुछ unfortunate events हुए हैं. समथिंग लाइक देखना, अभी जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं लाइफ के अंदर, हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आती है, लोगों की समझ हमें आती है, राइट. सो इनिशियली वी गो थ्रू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हम एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों का बिहेवियर समझ सकते हैं, राइट. इनिशियली हमें लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारा हमको लेके केयरिंग है एंड ऑल. बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आगे चलता है वी आर गेटिंग टू नो देयर एक्चुअल फेसेस, उनका एक्चुअल बिहेवियर हमें समझ आता है, राइट. तो हम स्लोली इन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों को समझते हैं एंड ग्रेजुअली जो है हमारा हर्ट पहले टूटता है. हमें सब बोलते हैं कि नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा, माई हर्ट इज़ क्वाइट ब्रिटल बिकॉज मैं चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हूँ. बट एक्सपीरियंस के थ्रू आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है. इट मीन्स यू आर गेटिंग द थिंग, राइट. यहाँ पे हर हर्ट ऑफ स्टोन वॉज अ रिजल्ट ऑफ हर प्रीवियस अनफॉर्चुनेट इवेंट. मतलब उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए उस एक्सपीरियंस के थ्रू नाउ हर हर्ट ऑफ स्टोन इज अ रिजल्ट. एक्चुअली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट. इस सेंटेंस के अंदर, इन दिस सेंटेंस द हर्ट इज सिंबलाइज्ड बाय अ स्टोन. हर्ट का कंपैरिजन किया गया है स्टोन के साथ. ओके, यहाँ पे इट मीन्स it is emphasizing on the lack of empathy she developed. She is lacking the empathy. Empathy मतलब क्या है? sympathy और empathy के अंदर फ़र्क. sympathy काफ़ी लोगों को पता है. empathy it means अगर कोई person है किसी पेन से गुजर रहा है या फिर किसी दर्द से वो गुजर रहा है, उस person की जगह पे जाके वो पेन फील करना is nothing but empathy. ओके, उसके जगह पे जाके वो पेन फील करना, वो ट्रॉमा फील करना इज नथिंग बट द एम्पैथी. सो हियर द पर्सन इज लैकिंग एम्पैथी. उसके पास एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सिंपैथी, एम्पैथी, ही इज लैकिंग इट. इट मीन्स हर्ट ऑफ स्टोन. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज पर्सोनिफिकेशन. सो एक चीज ध्यान में रखना, जब कभी पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, कभी भी ह्यूमन फीचर, अगर कोई भी, एक सेकेंड, ओके, सो कोई भी अगर ह्यूमन फीचर यानी कि ह्यूमन ट्रेट अगर एक नॉन लिविंग पर्सन के साथ, अगर एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है, या फिर वो ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन फीचर एक नॉन लिविंग थिंग को दिया जा रहा है, दैट टाइम वी आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन. बेसिकली इट इज़ अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स. नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन फीचर्स दे रहे हैं. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड इज व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड इज ब्लोइंग. अभी यहाँ पे देखना, दो एग्जाम्पल्स दिए मैंने. विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, नॉट एज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, और द सन इज शाइनिंग. ये दो एग्जाम्पल के अंदर देखना, विंड और सन दोनों भी क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है. बट इन दो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम दो ह्यूमन ट्रेट्स दे रहे, blowing and shining. So in this example, the non-living objects, wind or the sun, is being described as if they are alive. Both are non-living objects, but we are describing them as if वो alive है, जिंदा है, okay, and could act as their own according. Shining, glowing, okay, like
Personification allows the writer to create the life and motion within the inanimate objects. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइफ देना, नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ह्यूमन ट्रेट्स देना, ह्यूमन फीचर्स देना, उनको एक लाइफ क्रिएट करना, मोशन क्रिएट करना इज नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. सो we are assigning them some of the human behaviors, human emotion, human pain and all. This is nothing but personification, which is a poetic literary again device. Some of the examples I have mentioned here. मैं सारे examples को पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको इसका PDF मैं दे दूंगी. Okay, you have to once watch the video and let me know कि आपको PDF कब देना है. Okay, पहले तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी. The wind howled outside her bedroom window. The geese jumped out of the pan. The leaves let go of the tree and danced on the ground. अभी एग्जाम्पल देखना, the leaves let go of the tree and danced onto the ground. It means that जो पत्ते हैं उनको हम dancing feature provide कर रहे हैं, which is a human trait again. Okay, wind was angry that night. अभी wind कभी angry हो सकता है? प्रैक्टिकली नहीं, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग. बट एंग्री फीचर किसका है? ह्यूमन बींग्स का फीचर. हम दे किसको रहे हैं? विंड को दे रहे हैं. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. पूरे एग्जाम्पल्स के साथ एक बार गो थ्रू करना है, 2-3 बार इस PDF को पढ़ना है. एंड वंस यू विल गो थ्रू दिस PDF, आपको पूरे एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे. एंड एक बार ही आप एग्जाम्पल्स के थ्रू जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा लोड जो है कम हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. हर एक चीज़ के अंदर आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रॉफी. नाउ द अपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ हम किसी डेड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, किसी डेड पर्सन को मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया बोल सकते हैं, या फिर हम उसको एक ऑलरेडी डेड पर्सन और एक ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक, एग्जिस्ट नहीं करती, उस चीज़ को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे वी आर यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी तो हमें पता है. ओके, बट एट द सेम टाइम अपोस्ट्रॉफी मतलब, एक सेकेंड यहाँ पे मैं, ओके, एपोस्ट्रॉफी तो ये तो आपको पता है, एक सिंबल. उसके साथ साथ एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे हम क्या एड्रेस करें? इट इज यूज टू एड्रेस someone who is absent or already dead. It is used to address an abstract quality or idea or even a non-living object. Okay, very famous example for the apostrophe is the rhyme which we have learned in our nursery. Okay, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. तो यहाँ पे जो नर्सरी राइम है, ओके, जो जेन टेलर ने दी है हमें, यहाँ पे क्लियर रेफरेंस दिया है किस चीज़ का? द क्लियर रेफरेंस टू द स्टार एंड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड. यहाँ पे दिस एग्जाम्पल ऑफ द अपोस्ट्रॉफी इज द क्लासिकल एग्जाम्पल जहाँ पे हम एक डेड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विच इज अ स्टार, उसको एड्रेस कर रहे हैं. ओके, उसको एड्रेस कर रहे, दैट हाउ आर यू, व्हाट आर यू, ओके, आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इट इज लाइक ए डायमंड इन द स्काई. तो यह इस पोएम के अंदर हम किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? स्टार को एड्रेस कर रहे हैं. वी आर यूजिंग अपोस्ट्रॉफी. Okay, this is the classical example of the apostrophe. Again, nextly these are some of the examples of the apostrophe. मैं पूरे तो explain नहीं करूँगी, but यहाँ पे very famous example is the fourth one. Oh bed, finally I am with you. अभी इस example को देखना. Oh bed, फाइनली आई एम विथ यू. इट मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा समय से आप टायर्ड थे, आपको सोने का मन कर रहा था, बट लेकिन आप सो नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर वर्कलोड और समथिंग एल्स. ओके, तो यहाँ पे ओ बेड फाइनली आई एम विथ यू, इट मीन्स आई एम टॉकिंग विथ माई बेड, आई एम टॉकिंग और आई एम एड्रेसिंग माई बेड हियर. ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं. वाई डू यू बॉदर मी सो मच, यू इडियोटिक कंप्यूटर. कंप्यूटर को एड्रेस कर रहे हैं, ह्यूमन फीचर्स दे रहे, ह्यूमन ट्रेट दे रहे, राइट. ओ कैप्टन, फाइनली योर ड्रेडफुल जर्नी is over. Can't talk to you now, dear eyes. Why do you appear to be such pain? मैथमेटिक्स के साथ जो है हम ह्यूमन ट्रेट को कंपेयर कर रहे हैं. इट इज समथिंग नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, उसको ह्यूमन ट्रेट दे रहे. ओ कॉफी, माई स्वीट डार्क बेबी, हाउ वुड आई एवर लिव विदाउट यू. कॉफी के साथ अगेन, ओके, समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन लिविंग. ओके, सो ये हो गया. दिस वॉज ऑल अबाउट दी अपोस्ट्रॉफी. ओके,
सो कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस आज हमने डिस्कस किए. वन वाज सिमिली, देन वाज मेटाफर, द नेक्स्ट वी हैव सीन वाज पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी. सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस सम मोर फिगर ऑफ स्पीचेस. एंड दिस वाज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. एक बारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको पसंद आ रहा है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कुछ सजेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर्स, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एट द सेम टाइम you can subscribe to the channel if you are new. Whenever I'm going live, you can get the update for that. Okay, so thank you for watching it. Have a great day everyone. Bye.